So we started with the class components, and उसमें we started with the variable first component. वेरिएबल से पहले हमने स्टार्ट किया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट. So what is class? Is class is an क्लास मतलब स्ट्रक्चर. आपको मैंने दो एनालॉजी बताया था कि क्लास मतलब घर का जो प्लान बनता है, दैट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. सो क्लास इज एन स्ट्रक्चर, layout, set of guidelines, of guidelines, set of instructions, of instruction to complete or to create the pattern object. It is just a set of instructions or guidelines, and class then the logical integral. मतलब it is just a kind of a piece of paper. जब भी आप घर बनाते हो, घर बनाने से पहले आप क्या करते हो, आपका प्लान बनाते हो. उस स्ट्रक्चर का पहले आप स्ट्रक्चर बनाते हो, उस स्ट्रक्चर का यूज करके आप क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट. So we need to have, so class word, if you see, class word is derived from classification. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप और कैटेगरी और कैटेगरी. क्लास वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लासिफिकेशन और कैटेगरी. नाउ क्लासिफिकेशन मतलब पुटिंग सम थिंग्स. कोई भी क्लासिफिकेशन होता है या कैटेगरी होता है, ग्रुप होता है. रेलवे में बहुत सारी, उसमें बहुत सारी क्लासेस उन्हें डिवाइड कर, फर्स्ट क्लास, सेकंड. उन्होंने वो डिवीजन बेस्ड ऑन समथिंग दे हैव डिफाइंड. भी कई ग्रुप ऑफ, मैंने एक कैटेगरी बना दी. तो स्टूडेंट इज जस्ट कैटेगरी. अब मैं बोलता हूँ टू व्हीलर व्हीकल्स, टू व्हीलर व्हीकल, व्हाट दिस इज कैटेगरी. एक्चुअल टू व्हीलर व्हीकल्स मैंने बस बोल दिया कि इट इज जस्ट अ टर्म. इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप वी हैव मल्टी थ्री व्हीलर व्हीकल्स. तो थ्री व्हीलर व्हीकल्स क्या हो गया, ग्रुप हो गया. फोर व्हीलर के ग्रुप. वी ट्राई टू ग्रुप द थिंग्स. अभी आप क्लास वर्ड यूज करके आप क्या ग्रुप करने वाले, यूजिंग क्लास वर्ड वी ट्राई टू क्रिएट ऑफ टास्क related. We try to do, we try to create a group of related tasks to a particular object. क्या करते हैं हम, क्लास का यूज करके आप क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कैसे दिखे, हाउ द ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक, दैट वी डिफाइन विद द. अब एग्जांपल मैंने बहुत बार आपको बैंक अकाउंट का एग्जांपल बताया. उसमें लेट्स से यू वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट सबके लिए सेम ही होता है. तब उसका जो भी एट्रीब्यूट का फंक्शन सबके लिए मोस्टली यूजुअली इट. But before you start opening the bank account, they must have created a structure कि आप कोई भी कस्टमर का बैंक अकाउंट कैसे देखिए, what all operation we will to perform. ये कहाँ पे डिफाइंड होता है, तो एवरीथिंग इज डिफाइंड विद ऑफ. तो हाउ योर एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक, ये कहाँ पे डिफाइंड होता है, क्लास के अंदर. वेयर इट इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास. ठीक. तो क्लास इज ए visualization of how the object. Analogy example I had talked about analogies. Plan house. Yeah? Your actual houses, and remember. Then we talked about object. Talked about object. So what object is an object is an instance. Object is an instance of a class.
It is correct. It is correct. Nothing wrong in that. Object is an instance. But try to understand what do you mean by instance. What is instance? Instance is any memory space allocated at runtime. So, instance is any memory space that or object को कैसे define? Object is also memory space allocated. Object is also object is memory space allocated for the class type. तो जो क्लास के अंदर अपने डिफाइन किया था क्या डेटा रहेगा, क्या क्या मेथड रहेगी, सारा डिटेल्स अपने क्लास के अंदर, उन सबको जो मेमोरी एलोकेटेड उससे क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट whenever we create an object, the object creation is nothing but memory space is. So try to ask as much as possible questions. What is an object? Object is an it is an for the class type, and object creation is nothing but a memory space. And why do we need object? What question? Whatever the 3-4 lines I have written. What question? Why do we need object? We need object to perform task or operations or functions. Example, अगर आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं, that object is not, are you able to perform the operation as withdraw money, transfer, able to do? So we need object in order to perform task or function. Given the object, मतलब आपका अकाउंट ही नहीं है तो आप ये सारे ऑपरेशंस नहीं कर पाओगे. सो वी नीड ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ऑपरेशंस एज वेल एज सेव द डेटा. तो आपका कोई भी अकाउंट होगा, सम इंफॉर्मेशन टू कोड आल्सो फॉर दैट बैंक अकाउंट में क्या क्या होता है, आपका डिटेल्स होता है, अकाउंट नंबर, अकाउंट, ये सारी चीज़ें भी होल्ड करना पड़ेगा. फिर उसके डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है. ट्रांसफर मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर. डिपॉजिट मतलब आपका जो बैलेंस अमाउंट होगा वो प्लस होगा. विड्रॉ मतलब वो बैलेंस अमाउंट माइनस. तो आप क्या कर रहे हो, यू हैव डेटा एंड यू हैव सम मेथड्स आल्सो एंड मेथड्स आल्सो. तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या है, ऑब्जेक्ट्स. नीड ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म टास्क और फंक्शन एंड स्टोर द डेटा. मतलब डेटा स्टोर करने एज वेल एज ऑपरेशन परफॉर्म ऑब्जेक्ट के अलावा. तब इफ यू डू नॉट हैव द ऑब्जेक्ट यू विल नॉट बी एबल टू स्टोर डेटा, यू विल नॉट बी एबल टू perform the operation. So I need the object. Why do we need object? What is an object? And then what is the question? Where the memory allocation? So where data is actually stored, where objects are stored? Objects are stored inside the which memory area? Objects are stored inside the heap memory. Where objects are stored? Objects are stored inside. और आपका जो प्लान बनाया था आपने, क्लास और स्ट्रक्चर, कहाँ पर स्टोर होता होगा? Class structure is stored inside the class or method. कहाँ पर स्टोर होता है? क्लास और मेथड. आइडिया. Okay. Now, how many objects we can create from the given class? So, can we directly create the object? We need class first. Get an
तो आप क्लास के बिना आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते, यूजिंग वन क्लास हाउ मेनी कैन क्रिएट फ्रॉम द गिवन क्लास, वी कैन क्रिएट any number of get any number of objects. Every object you that is nothing, right? Every object created is the memory. जितने बार भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उतने बार आपका. Now how do we create a class and how do we create a how part? How part. For that, let's the syntax. What syntax we? How do we create a class? We write the class key. Write the followed by we write that is variables, right? That we can now constructors are optional, but constructors we can write blocks we can nested class can write. This is syntax we know. And how do we create an object? How part or syntax? How do we create a how do we create an object? Class name, reference name equal to new new class name. Here, this is the syntax. The syntax. Now, example wise, get the class already. Get the class a bank account. Class we have, and then inside the class we have some variables. Let's say in account number, string, the name. If you see the naming convention, I'm the class name is upper camel case, variable names upper camel case, account number, account holder, now in balance, and we might have some methods also. Void deposit, draw. Talk about the these are the methods we have. So this is the class we have. The class we have. Once we have the class, what do we do next? We have to have the class. Class we have. This class, what do we do? Return. How do we create an object? Get the bank account. Count new. What is object in this particular thing? What is the object? Yes, what is the object in this? Thing. This particular thing. See this. Then what is account? Yes. What is particular account? Is new. Then we have this thing bank account. What is this? Constructor का मतलब object create करने के लिए we use this. Constructor is nothing but a kind of a
tool using which we create the object. The object create करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर, देयर आर मल्टीपल, क्लास होना चाहिए, फिर उस न्यू कीवर्ड, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल, बहुत सारी चीज़ है दैट वी नीड एन ऑब्जेक्ट. देन दैट बैंक अकाउंट, now see this carefully. Now we have the class, this class, so we create the object. We have the class, this particular thing, this account is nothing but a reference. अभी मेमोरी में कैसे स्टोर, हाउ दिस इज, द मेमोरी count is a reference variable pointing to an object. ऑब्जेक्ट मतलब अ कंटेनर और मेमोरी लोकेशन. अब इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर क्या क्या स्टोर होगा आपका, आपके पास दो वेरिएबल्स है. और दिस अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर भी हाँ, अकाउंट नंबर, name will be initialized with null, and there was a balance with the memories. तो एलोकेटेड मतलब वहाँ पर कुछ, there is some value you are looking, there is some value on that particular, that's why this is the, ये सर ये रहे. That's object. Very clear. What is an object? Why do we need an object? How do we create an object? What do you mean by object creation? Where object is stored? Uh, what is class? Why do we need class? How do we create a class? All the questions are how to in class, where class structure is stored inside the class, or objects are stored inside the, they are stored in the heap memory. ठीक. The basic we are talked about. के बाद हमने क्लास कंपोनेंट्स, मतलब एक क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं इसके बारे में हमने. क्लास कंपोनेंट्स, व्हाट आर द क्लास कंपोनेंट्स वी हैव, what are the class components we have, variables, methods, constructors, or blocks, nested classes. फिर वेरिएबल्स हमने देखा था, स्टार्ट किया था. वेरिएबल्स हमारे पास लोकल, स्टैटिक वेरिएबल, फिर इंस्टेंस वेरिएबल्स, मेथड्स, इंस्टेंस मेथड्स, स्टैटिक मेथड, कंस्ट्रक्टर्स भी have default constructors, zero parameterized constructor, parameterized constructor, zero parameterized blocks, we have instance blocks, no? Static nested classes, we have static nested classes, or non-static nested classes. They're also called as, that is, inner classes, a class, a class. Then we have
local inner classes, no, anonymous classes, यदि ये सारे कंपोनेंट स्टार्ट किए थे। वेरिएबल्स वी हैव कंप्लीटेड, मेथड स्टार्ट किया था, देन वी हैव कंस्ट्रक्टर्स, देन वी हैव ब्लॉक्स एंड आपको बस दो चीज़ें समझनी है, ये वेरिएबल एंड मेथड, रेस्ट ऑफ थिंग्स होने के बाद हमें दिस what are the components we have, everyone knows what are the things, class कम जावा क्लास के अंदर ये सारी चीज़, बिलीव मी ये बेसिक बहुत सारे लोगों ने, लोग बहुत सारे लोग मेथड के बाहर भी प्रिंट, बाहर भी, दैट इज नॉट, बहुत सारे लोग जो मेथड के प्रिंट सेट, वो मेथड के बाहर लिख, दैट इज नॉट स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखते हैं राइट इनसाइड, तो पता होना चाहिए व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर मेथड्स लिख, मेथड्स के अंदर आप स्टेटमेंट जो कैन राइट दैट, कंस्ट्रक्ट आल्सो कैन के अंदर कोड लिख सकते हो, ब्लॉक्स के अंदर एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास लिख, लेकिन ऐसे फ्रीली मूविंग आप एसओपी नहीं लिख, फॉर लूप नहीं लिख सकते, राइट, वो कहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, राइट, उसका सिंटैक्स है वैसे है उसका, नॉट मैसअप विद दैट, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ओके, वेरिएबल का बेसिक्स हमने पढ़ा था, व्हाट वेरिएबल इज वेरिएबल, दैट आल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, is variable is a name given to a memory location address so that we can easily store the data, access the data on memory. Right, it is a name given to memory location address so that we can the data memory. What is the variable? Why do we need variable? Everything. Here, syntax. How do we create how do we create an variable? Syntax. You have to write data type, variable name equal to some sample int age equal. What is the age? What is age in this case? But a variable. So this is an data type equal to is 50 the value. आप इसे ऐसे समझ सकते हो, तो वी हैव अ आपको कोई कंटेनर होगा, इस कंटेनर कुछ मेमोरी, बहुत बड़ा एड्रेस होगा, ये कंटेनर की जरूरत क्या होती है, व्हाट इज द यूज ऑफ मेमोरी, टिपिकली व्हाट इज द यूज ऑफ एनी मेमोरी टू स्टोर द डेटा, तो डेटा स्टोर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से कंटेनर में डेटा स्टोर, का लोकेशन पता होना चाहिए, फिर उसका लोकेशन पता हो गया, फिर से डेटा स्टोर करोगे, डेटा क्यों स्टोर करते हम, व्हाई डू वी स्टोर द डेटा, बिकॉज वी नीड दैट डेटा लेटर ऑन, द डेटा सिंपली रीजन इज कि हम उसे बाद में चाहिए, दैट्स द रीजन, हम उसे स्टोर करेंगे तो बाद में एक्सेस भी, तो डेटा कहाँ स्टोर्ड है ये हमें पता होना चाहिए, शुड नो वेयर द डेटा इज,
दैट वी कैन एक्सेस। आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यू स्टोर 50, 50 वैल्यू स्टोर एट सम लोकेशन, तो आपको लोकेशन पता होता आप एक्सेस, बट एक्सेसिंग द वैल्यू यूजिंग लोकेशन एड्रेस, आप क्या करते हो, you write some alternate label, have a label to the box, that is, now both of these are nothing but labels, both of these are labels, आप उसे एज बोलो या मेमोरी एड्रेस बोलो, वन द सेम थिंग, वो वैल्यू एक्सेस पाओगे। तो एज से पता चलता है कि, अभी ये नेम से पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जार में क्या है, या पर्टिकुलर कंटेंट कंटेनर में क्या वैल्यू है, दैट वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द वैल्यू इट स्टोर्ड इनसाइड कंटेनर। फॉर दैट पर्पस वी, द वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट in every other programming language you will see variable is a kind of a label given to that। यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज किया है इंट एज इक्वल, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या यूज किया, डेटा टाइप। आप लेबल कब दे सकते हो कोई भी कंटेनर को, जब कंटेनर होगा तभी, you have the container then only you can apply the label or you can give the name। कंटेनर ही नहीं है तो आप लेबल दे सकते हो, आपको पहले क्या होना, तो हाउ डू वी गेट द मेमोरी टाइप, इंट लिखने से आपको क्या होता है, मेमोरी स्पेस एलोकेट। int is nothing but saying 4 bytes of memory space which will help you store the integer values। ये वहां पर लिखने से पता चल, पहले कंटेनर बन गया, उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया, एज, आपने उसे लेबल दे दिया, उस पर्टिकुलर कंटेनर में आपने वैल्यू असाइन करी, आपने पहले कंटेनर किया वो लेबल दे दिया, और फिर उसके बाद आपने वैल्यू, वी यूज डेटा टाइप एंड लेबल कॉन्सेप्ट in order to store the data। ये बेसिक सब clear है। This is what we have seen on the day 2 or day 3, variable and data type concept, so everyone must be aware, ठीक। now उसके बाद हमने डेटा टाइप्स कॉन्सेप्ट भी देखा था आई थिंक थोड़ा बहुत। so what data type is, what data type does, so we need data type first or variable first, we need data type first, so the variable, it is a, it specifies the size, range, specifies size, range, type of, by the size, range, or the different types of data types, different types of data types मतलब different types of containers, क्या बोला, there are different types of, there are different data types available, what are the data types available, there are different data types available, so we have primitive, means have primitive data types and non-primitive, that is also called as reference or derived types। Primitive data types, we know that, what are the primitive data types, we byte, short, in, long, double, char, yeah, there are 8 primitive data types, so there are different types of byte मतलब 1 byte, short मतलब 2 bytes, मतलब 4 bytes, long मतलब bytes, float मतलब 4, double मतलब 8, char मतलब 2, boolean मतलब 1। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इन सब का यूज करके आप क्या स्टोर कर सकते हैं, स्टोर दी कैरेक्टर का यूज करके कैर, और बूलियन का यूज करके ट्रू फॉल्स वैल्यू। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देयर आर एन नंबर, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नाउ in order to have non primitive data types, these are also called as derived types। derived क्यों बोला जाता है, because these are created using the primitive, क्या बोला मैं, these primitive data types are created using primitive data type, क्यों,
Now based on this data type, you have different types of variables again, primitive variables and नॉन प्रिमिटिव. तो उस पर अगर आपने लेबल कोई प्रिमिटिव कंटेनर को दे दिया तो उससे क्या बोलोगे आप? कोई नॉन प्रिमिटिव कुछ कंटेनर है, इफ अ कंटेनर कंटेन्स अ नॉन प्रिमिटिव वैल्यू, तो वेरिएबल को क्या बोलोगे आप? नॉन प्रिमिटिव. अगर कोई कंटेनर में प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू है, उस वेरिएबल को क्या बोलोगे आप? प्रिमिटिव वेरिएबल. तो टाइप ऑफ वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द टाइप of variable is based on type of container or data type. So we have different types of, what are the different types of variables we have? There are different types of variable, that is primitive variable. What is primitive variable? Primitive variable and non-primitive. So primitive variable, we know that. What is primitive variable? If a variable contains primitive data type value, then it is said to be variable. Said to be. Example, int age equal to 50. So age is a, then the primitive. Non-primitive variable, so variable contains non-primitive value, non-primitive data type value, non-primitive reference, non-primitive variable or reference variable. Example, string are equal. बहुत सारे examples. Friend. What is non-primitive variable? Are friend, these are non-primitive variable. मतलब एक कंटेनर में दो ही टाइप की वैल्यू हो सकती है, एक प्रिमिटिव टाइप की और दूसरा कौन सी? नॉन. नॉन प्रिमिटिव मतलब किसी और कंटेनर का एड्रेस या रेफरेंस. रेफरेंस वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल क्या करता है, वो रेफरेंस स्टोर करता है या लोकेशन, किसी और मेमोरी लोकेशन, कोई दूसरा कंटेनर होगा उसका एड्रेस इस पर्टिकुलर कंटेनर. ऐसे वेरिएबल को आप बोलते हो रेफरेंस वेरिएबल. क्या बोलते हो आप? रेफरेंस वेरिएबल. क्लियर है? नाउ बेस्ड ऑन द यूसेज, बेस्ड ऑन द यूसेज वेरिएबल टाइप्स. लास्ट क्लास में आई एम जस्ट रिवाइजिंग so that we can, based on the usage variable types, what are the variable types we have? Right. अभी कोई भी टाइप का वेरिएबल हो, यूसेज, लोकल वेरिएबल हो, इंस्टेंस वेरिएबल हो, दिस विल बी आइदर प्रिमिटिव और local variable can be primitive, instance variable can be primitive, static variable can be primitive. Getting the idea? Let's talk about local variable. What are local variables? What are local variables? What, why, how? Now, if you know the class and object, it is very easy to understand the class and object. Think of your bank account. अभी आपको कोई एवरी कस्टमर हैज 3 फील्ड्स, कस्टमर आई, उसका अकाउंट नंबर, नाम और बैलेंस. ऐसे 10,000 कस्टमर. मुझे क्या करना है, 10,000 कस्टमर का बैलेंस की या एवरेज बैलेंस सबका मिला के एवरेज बैलेंस कैलकुलेट, या उनको मंथली कितना इंटरेस्ट
वेरिएबल होगा, ये कैलकुलेट। ये सारी क्या है? आई वॉन्ट टू स्टोर दिस इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, I want to store these intermediate results. There are some temporary calculations. The temporary calculations to perform certain tasks, I need to use some intermediate storage. Use some intermediate. ऐसे variables को variables which are used to store intermediate results, which are not specific to object or which are not, or use local variable. So when to use local variable? You want to store some intermediate results. What is local variable? अगर आपको कोड में दिखे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप लोकल वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई, कैसे बोलोगे आप लोकल वेरिएबल क्या होता है? एन वेरिएबल which is defined by the method, vector or block. The variable, it's the variable which is defined inside a method, vector or a block. ऐसे वेरिएबल क्या बोलोगे आप? लोकल वेरिएबल. So we should use local variables, store intermediate or temporary. Local variables stores the data which is not specific to object or common for all of the variables. Stores the data which is not specific to object or common for all of the. Now where local variables are stored? What is local variable? Why do we need local variable? Now where local variables are stored? Local variables are stored inside the stack memory. The stack memory. अब ये कब क्रिएट होता है? कब क्रिएट होते हैं ये local variables are created when the method, vector or block is called. What is I, where, when, then? Well, how part? How do we define how part? Let's see how to define table access. Let's see the syntax. So let's say we have a class. Oh, hello. Let the class have a method, probably main method, public, static, void. Not necessarily only main method, कोई भी method हो, public, static, string, yes. और मेन मेथड के अंदर या कोई भी मेथड के अंदर आप जो वेरिएबल क्रिएट करते हो इंट एज इक्वल टू 50. नाउ एज इज नथिंग बट अ लोकल. व्हाट इज एज? देन this args is also local variable. Args is also local variable. The local variable. लोकल का मतलब है दिस इज. तो args is non primitive. It's also non primitive. It is primitive. For example, string this case is non primitive.
पढ़ाई नहीं किया वली में। ओके, व्हाट इज लोकल वेरिएबल? लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल्स। What are local instance variables? What, why, what are instance variables which are created inside the class but outside of methods, structures, and without static, without your what question? Your what? Why do we need instance variables? Instance variables are used to store the object specific एग्जाम्पल। अभी बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, तो हर एक यूज़र, हर एक जो कस्टमर का बैंक डिटेल्स करना है सब लाइव एप्लीकेशन। देयर आर मल्टीपल यूजर्स लॉगिंग एट, सबका डिटेल्स कहाँ? ऑब्जेक्ट के अंदर ही। तो लेट्स से देयर आर 1000 यूजर्स आर करंटली लॉग्ड इन इनटू बैंक अकाउंट, बैंकिंग लॉगिन किया, सबका डिटेल्स कहाँ पे? ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स। सो एवरी ऑब्जेक्ट तो द इंफॉर्मेशन, सबका अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये सारी डिटेल्स। So if you want to store object specific information, then we go with the instance. What do we go with? The instance variable. And what? Why? How do we create that? We will see that. When instance variables are, when instance variables are, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आपके पास अकाउंट नंबर कब मिलता है? जब अकाउंट होगा तब, राइट? इंस्टेंस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, द इज क्रिएटेड, और ये भी वेरिएबल्स ही है। वेरिएबल से मतलब कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, इज अ डेटा, सो इट मस्ट बी स्टोर। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? They are stored inside the heap memory. They are stored inside the heap memory area as part of ऑब्जेक्ट के अंदर, ये हीप में रहेंगे ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ। You know that what is it? Why do we need that? Then where it is stored is created. Then how part? How to create? Let's see that. How to create and देखते हैं। We'll create a class bank account variables. See here, int account holder, account number is the variable. Account number is the variable. String account holder name. Then we have balance. These three variables are, these are inst, are
variables. Now I have main method inside this particular class, so that I will start using. I have main method public static void main. Sir, object create करना पड़ेगा. Then only you will get the memory. These are all instance variables which are created in the class, but outside of all method blocks without static key. अभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट. Now the moment you write this line, what happens is when you write this line happens memory space. Here is the reference point object chain. Now when you write this line, you are these variables account number आपका set होगा account number to your account holder name to balance. ये सारे वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट. अब मुझे इनको क्या करना है, एक्सेस करना है, मतलब प्रिंट करना है मुझे. नाउ दीज आर स्टोर्ड, दीज वेरिएबल्स आर स्टोर्ड. नाउ आपने डिफाइन किया उसको, डिफाइन किया मतलब यू हैव जस्ट रिटर्न दैट. मेमोरी स्पेस उनको एलोकेट हो गया, डेटा इज स्टोर्ड. नाउ ये क्या करना है, डेटा है उस आप क्या करोगे, एसओपी ऑफ. अब इतने सारे कस्टमर, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, आपको कोई पर्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट नंबर चाहिए. आई वांट अकाउंट नंबर, आई वांट अकाउंट नंबर. I want account holder name, but there are multiple account holder name. Then we have multiple balances. There are thousands of. तो आपको बताना पड़ेगा ना ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ये कस्टमर का अकाउंट का मुझे का बैलेंस. तो जहाँ पर भी स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपके पास रेफरेंस काइंड ऑफ. तो दिस अकाउंट पर्टिकुलर थिंग अकाउंट कॉल्ड अ रेफरेंस. आप यूज अकाउंट डॉट बाद फिर अकाउंट डॉट 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 इज वे एक्सेस. आपने यहाँ पर क्या यूज किया, रेफरेंस. reference dot how do we access that, how to access that, by using access equals thing reference with dot here. Here object. रहेगा. Now lastly let's talk about
Static variables. We have the number of questions all set. Is this variables which are created at the class but outside of methods, constructors, and blocks with, remember, with this, remember, with static. And static variables are used to store the data. Now सारे customers के लिए क्या common है? Account number. So static variables are used to store the data is common for all of the variables are used for all of the objects. Variables are used to store, which is then where they are stored, when it is stored. Static variables are created when the class is created in the, अब अगर आपको कोई कॉमन इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, सारे कस्टमर के लिए कॉमन क्या है? दिस इज समथिंग कॉमन फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बार स्टोर होना चाहिए, बार बार स्टोर करके इट इज वेस्ट ऑफ। आप क्या करते हो ऐसा क्या? एक ही बार स्टोर, दैट इज नथिंग बट योर स्टैटिक वेरिएबल। नाउ ये वेरिएबल को मेमोरी कब मिलता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले। अब ऑब्जेक्ट हो, क्रिएट हो ना हो, उसको कोई लेना नहीं। सबसे पहले क्या क्रिएट? स्टैटिक वेरिएबल। सबसे पहले क्या क्रिएट होगा? स्टैटिक वेरिएबल। कब क्रिएट होगा? स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड इन, तब मेमोरी में जैसे क्लास लोड होता है योर स्टैटिक वेरिएबल्स विल, और ये कहाँ पर स्टोर हो? स्टैटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द क्लास और मेथड में, क्लास और मेथड में। हाउ टू क्रिएट स्टैटिक वेरिएबल्स? We access static variables using what? Simply, यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल है, मेरे पास स्टैटिक, स्टैटिक बना रहा हूँ, स्टैटिक दिस एज स्टैटिक, और आप बोल सकते हो बैंक नेम। दिस इज नथिंग बट योर, एक्सेस कैसे करोगे आप? दैट ऑफ say so class name, what is the class name? Count dot here. How to create static variables and to access, कैसे क्रिएट करोगे? दिस इज हाउ वी क्रिएट द स्टैटिक वेरिएबल्स और उनको एक्सेस class name dot वाला। Okay, then we talked about methods, talked about methods
तो मेथड के बिना आप ये सारा डेटा, without these methods you will not be able to perform, not be able to perform anything. So we talked about methods. I simply just quickly grab that. Methods. Now methods are something that we need in order to write the software, या कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, you need methods के बिना, methods are nothing. What are methods? Simple term. These are nothing but steps or instruction. Example, क्योंकि आपको कोई मैगी बनाना और रेसिपी डिटेल्ड, आप क्या करते हो उस रेसिपी, दिस इज प्रिंटेड ऑन द पेपर, वहाँ पर फर्स्ट डू दिस, आपके पास रेसिपी, you have step 1, step 2, step 3. Method is also kind of task. What is the task? To a Maggie get or get a tea is also kind of a recipe. चाय बनाने ही एक क्या है आपका रेसिपी, our recipe, our recipe. So we have a steps one by one. कोई भी task. So why do we do programming? What is the simple reason why do we do the programming? With the task. Now the same task can be done by us also, but it will take a lot of time. Let's say what is the task? If I ask you, find the square root of 1 to 1 CR, the square root of all of these numbers, or create the square of all these numbers, or find the table of all of these. Are you going to do that? Yes, you can do that. Absolutely. It will take a lot of time, and effort. If I ask you, write the star. Now I want to print a star. I want to print a star. Let's say 1 CR. One option is do that manually and do the calculation. Now let's say I have a calculation. Now let's say मोदी साहब ने डिसाइड बोनस कैसे देंगे, इतना टैक्स दिया तो 1% उसको बोनस. तो लेट्स से देर आर 5 CR टैक्स पेयर्स आर देयर इन, 5 करोड़ लोगों को कुछ ना कुछ बोनस देना इस साल दिवाली. कि क्या करना है आपको, इन सारे टैक्स पेयर्स इन सब का आपको 1% मैन्युअली, कोई 4-5 बंदे बैठ के या जो भी कैलकुलेट कर सकते. मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, दूसरा दिवाली आएगा कैलकुलेशन, right? So instead of we doing that task, we take help of computer. For that purpose, what we do, the steps हम एक बार लिख, that steps are given to computer. Now he has a data, he'll read the data, calculate the amount, and it will disburse. One click, your efforts, accuracy is, your time is, your accuracy, right? So in order to achieve that, program लिखना, right? So methods are nothing but your technical, right? Programming nothing but के अंदर आप steps. So what is method? Method is nothing but a step-by-step guide set of instructions to complete a task. Right? Now we write the instructions, the method. Method is an class name. It is an set of instructions of instructions or steps to complete a task. The आप मुझे बताओ क्या वहाँ पर रेसिपी लिखा हो, अपने आप मैगी क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जो भी उन्होंने प्लान दिया वो एग्जीक्यूट परफॉर्म करना पड़ता है ना आपको.
one step. So method contains, what method contains? Method definition, method call, or the definition मतलब write करना, that finding the set, finding the set, input, output. Method call means the steps. तो आप मेथड कॉल कब कर पाओगे? जब आपके पास मेथड डिफाइन हो। आप मैगी कब बना पाओगे? अब तो रेसिपी क्या चाहिए? रेसिपी। So what is a method? Method is nothing but a set of instructions or steps to complete tasks which are so complete. Method contains all. Method और भी हम उससे बोल सकते हो, method is an group of events are are method is an are enclosed the spaces as name, input, and type, syntax. Let's do syntax. Syntax. So lastly, how fire from fire return type, method name. Example. So your favorite method, public is access, public static, but a static is nothing but a access fire, and void. Void means return type. Main method name. The input parameter. So if the input the string r's, these are nothing but put your method, the method. यहाँ पर आप statements system dot और आप टास्क दे सकते हो, टास्क टू हेलो। Now we have different types of based on the input it accepts and the four types of. What are the four types of methods? The types. So and four types of method. Method one, in method one, let's say this accepts a method. Method का क्या टाइप होगा? No input, method one, method two,
straightforward. Input as well as its can be no input but it's or no input but provides. We'll try to write the method. Example, now no input, void. This method does not accept anything and does not return. Similarly, input and output. The int add accepts to 1 or 2. Returns the output for 1 plus or no input but provides output. The string name, I say then accepts the input, right? The method name. You can give any name. Method name should be appropriate. अब क्या काम कर रही है, स्टेप्स किस, आप बना रहे हो मैगी और उसको लिखा है रेसिपी, पिज्जा रेसिपी, चलेगा क्या? यू आर मेकिंग तो रेसिपी द मैगी, कैन राइट सम कंज्यूम सम नंबर प्रिंट कर सकते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मेथड डिफाइन. अभी जो मैंने क्या किया, मैंने रेसिपी क्या कर दिया. अब मुझे क्या करना, मेथड कॉल करना. मेथड कॉल करना. हाउ डू वी कॉल द मेथड? लेट्स सी दैट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड. टॉक अबाउट दैट टाइप्स. फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेथड कॉल और कैसे करते हो आप मेथड कॉल? मेथड नेम लिखते हो आप, कुछ ऑप्शनल इनपुट होता हो आप भेज सकते हो, और सेमीकोलन कॉल करोगे आप मेथड नेम. Example, let's see the example. Creating example where creating a class, say calculate. I have a method int. I'm making this a static public method, that public static. Public मतलब anyone can access. Public static. और ये मेथड का नाम है add. Public is access specifier, access modifier. Int मतलब return type, क्या integer type value. Add मतलब name, क्या करता है add. Saying int per 1 पर. अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग हियर. एडिशन कर रहे हैं, मेथड लिख रहे हैं. वी आर डिफाइनिंग द मेथड, वी आर जस्ट डिफाइनिंग द रेसिपी. देन पर 1 प्लस पर ने क्या किया कि बस हमने मेथड डिफाइन किया. व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट डिफाइन द. लेट मी राइट द मेन मेथड आल्सो. पब्लिक स्टैटिक void. मेन मेथड कौन कॉल करता है? मेथड इज कॉल्ड बाय. अब मुझे क्या करना है, उस मेथड को कॉल करना है, मेथड को ऐड मेथड. हाउ डू आई कॉल दैट? डॉट आउट डॉट. अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करना है? अब मुझे मेथड कॉल करना है, तो कुछ नंबर पास करना है.
है ऐड, ऐड मेथड है और उसके पास किया 100, 100 एंड ये हुआ आपका मेथड कॉल की वैल्यू रिटर्न। उस वैल्यू को आप क्या कर रहे हो आप, ये वैल्यू रिटर्न वैल्यू को आप कर रहे हो, आपका आउटपुट देगा, आउटपुट क्या देगा, तो और दो चीज लिखो, दिस इज कॉल्ड एस मेथड, डेफिनेट। और ये जो आपने किया यहाँ पर पर्टिकुलर थिंग, एस एस फिर कॉल से क्या होता है आपका, कॉल जाएगा फिर कॉल जाएगा के पास, 100 300 कॉपी होगा, नंबर वन एंड नंबर टू आर लोकल ऑफ, 100 कॉपी होगा इस नंबर वन में, 300 कॉपी होगा फिर नंबर वन प्लस एडिशन होगा दैट वैल्यू। दिस हाउ वी फाइंड द मेथड एंड दिस इज द सिंपल। ओके।